What's up guys, it's Ashmita here and welcome back to my YouTube channel. So today we are heading to a known place and most frequently visited place, that is Jonha Fall, and it is around 30 to 35 kilometers from city and we have almost reached here. अब हम ये रास्ते से ऊपर की तरफ जाएंगे और अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे. And if you haven't subscribed yet, make sure you subscribe to my YouTube channel. And without further ado, let's get into this video. We got here the children park. छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं. कैसे ये चढ़ा हुआ है उस पे. काफ़ी स्पेशियस है जगह, बैठने के लिए काफ़ी प्लेस प्रोवाइडेड है. आई थिंक यहाँ पे जिप लाइन वाला है या फिर कुछ और है. कितना पैसा पूछते हैं ना लोग. कितने का है? हायर ऑफ 100 रुपया और लोअर 20 रुपये. ऑलराइट गाइस, अब हम यहाँ से डाउन स्टेयर्स जा रहे हैं और आई थिंक हमें कितने टाइम लगेगा नीचे जाने में. 20 मिनट्स के अराउंड हमें लगेगा और मे बी स्टेयर्स इसमें होंगे 300 to 400 स्टेयर्स अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ. एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, वो काउंट अप करते करते जा सकते हैं. वाह, दिख रहा है यहाँ से फॉल. अच्छा लग रहा है. काफ़ी टाइम के बाद आए हैं. आई थिंक 2018 में आए थे जनवरी, उसके बाद आज जाकर आ रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद. आई थिंक और थोड़े से नीचे हमें जाना है, बस पहुंच जाएंगे कुछ देर में. काश उतरने का ऐसा सिस्टम होता कि डायरेक्टली हम नीचे उतर रहे हैं और चढ़ने के टाइम पे जिप लाइन होता है जो हम डायरेक्टली हमें ऊपर की तरफ लेके जाता, तो कितना ईजी हो जाता. चढ़ने के टाइम पे ज़्यादा मुश्किल होगा. Finally made it to this place. Behind me is the Jonha Waterfall and look how amazing and beautiful this place is. मुझे बिलीव नहीं हो रही है कि इस दिसंबर के मिड दिसंबर पे इतनी ब्यूटीफुल लग रही है. आई थिंक जनवरी के टाइम पे जब लोग यहाँ पे पिकनिक करते हैं तो काफ़ी आगे तक हम वहाँ तक जा सकते हैं, तो वो चीज़ अच्छा लगता है वहाँ का. और फिर यहाँ पे ये बात अच्छी लग रही है मुझे कि दिसंबर पे अभी मिड दिसंबर है, सो काफ़ी क्राउडेड भी है. ऐसा मैं सोच कर नहीं आई थी कि यहाँ पे इतनी क्राउड होगी और काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट किए हुए और अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और फिर जो भी उन्हें ज़रूरत है बस कर रहे हैं. दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down.
I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop. Alright guys, this is it for this week's video. Give this video a like, share and turn on the post notification bell so that you get notified every single time I post something new. See you guys in the next vlog. Peace!